समापन की ओर चल रहे हैं। जैसे से अभी आप लोगों ने प्रभु के प्रिंसिपल माधव से स्मरण किया, जिस प्रपंच की आज द्वितीय दिवस है और 2-3 दिन तो रहा ही है। बहुत सुंदर रूप में, सुचारू रूप में इस साल परिक्रमा, कथा भी बहुत सुंदर है। कितने परिमाण बोल सकते हैं, सभी अपने अपने कंपटीशन करते हैं। देख करके संसार के लोग धन कमाने में कंपटीशन रखते हैं, मकान बनाने में कंपटीशन रखते हैं। हमारे बगल में कोई अच्छा मकान बनाया, 3 मंजिल 2 मंजिल बनाया, तो मेरा भी इच्छा होती है कि 5 मंजिल क्यों बना दो। स्कूल कॉलेज में भी पढ़ने के समय भी सब कंपटीशन करते हैं, हमें अच्छा मार्क्स मिल जाए, क्योंकि संसार की रीति है। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में ऐसे प्रतियोगिता भाव नहीं, कंपटीशन भाव नहीं, हम भी आदमी पढ़ नहीं सकते। पारमार्थिक जगत में इसी प्रकार की है। कौन कितने परिमाण अच्छी रूप में भगवत कथा को जो है प्रकाश डाल सकते हैं। कथा किंतु उसी कथा को कौन कितने परिमाण सुचारू रूप में, सुसंबद्ध रूप में, अलंकार आदि के द्वारा, भाषा के द्वारा, भावों के द्वारा व्यक्त कर सकते। भाषा उसी कहते भाव अभिव्यक्ति की भाषा, भावों की अभिव्यक्ति करना की नाम ही है भाषा। भाव वो अंग्रेजी में हो, हिंदी हो, बंगला में हो, चाइना में हो, किसी भी उसके भावों को अभिव्यक्ति करते हैं। अभी हम लोग दामोदर अष्टम की अंतिम श्लोक की कथा को श्रवण किया, जिसमें सप्तप्रथम बनी मधुरेणु समापयते मिष्टान्न परमान्न कब दिया जाता है? अंतिम में दिया जाता है। ये बंगाल के अनुसार, बंगाल के अनुसार पहले सब्जी दिया जाता है, करेला की सब्जी दिया जाता है, कड़वा दिया जाता है। फिर धीरे धीरे दाल साग आदि अनेकों सब्जी बताते पनीर की सब्जी आ जाता है, और फिर चटनी आ जाता है, और इसके बाद अंतिम में सब्जी को अंतिम में जो डाला जाता है रसगुल्ला, इसके बाद खीर बसाता है। मिष्टी वही संदेश गुलाब की है, संदेश मिष्टी दही। ठीक उसी प्रकार हमारे सप्तव्रत मुनि सनातन गोस्वामी पाद वो टीका में उसी प्रकार करते हैं, मधुरेण और समापय। सप्तव्रत मुनि धीरे धीरे भावों की जय दस्त से सबका वात्सल्य और अंत में माधुर्य भाव व्यक्त करते हैं। और माधुर्य भाव के अंतिम जो कथाएं जो है किस प्रकार श्रृंगार रस में प्रवेश हो। गौड़ीय वैष्णव की प्राण स्वरूप क्या है? ये श्रृंगार रस में प्रवेश करना, जिसका हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद उज्जवल में ग्रंथ में श्रृंगार प्रकरण भी वर्णन किया। श्रृंगार रस प्रकरण माधुर्य और तत्व भाव की सर्वश्रेष्ठता जहां पर प्रतिपादन किया। उसी प्रकार दामोदर अष्टक में श्रील सप्तव्रत मुनि अपने लोगों की आगे बढ़ाते हुए राधा की दास कैसे प्राप्त हो, गौड़ीय वैष्णव की यही उद्देश्य है। असस्वदास्य एक उनके जीवन की आशा है विश्वाहानुनंदिनी श्रीमती राधा की किंकरी इंद्रियों की परिचारिका के रूप में मेरा भाव प्राप्ति हो। इसलिए कहते हैं मस्त धाम ने स्मृति धाम ने दुनिया कराया तो विश्वस्त धाम ने
नमो राधिका हुई तदीय प्रिया हुई नमो अनंत लीलाय देवाय। इस कथा को महाराज भक्तों ने तो अपने अपने भावों के द्वारा व्यक्त किया। उसी कड़ी में दो एक शब्द के द्वारा मैं अपने भावों को व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसमें सनातन गोस्वामी पास वर्णन करते हैं। कहते वो दाम को मैं प्रणाम करता हूँ, उधर भी प्रणाम करता हूँ। जिस उधर की ऊपर जो है सुंदर रूप में दाम जो है प्रसिद्ध जो है माँ दस्ता के वास्तव भावों के द्वारा बंधी और वो रस्सी दाम और उधर दोनों में नाम इस पूरा दिन की दाम है जो प्रकाश जो है सुंदर रूप में जाचरमान रूप में प्रकाशित हो रहे और सत्य जो प्रकाश करने उस दान उधर के इसके प्रणाम करते हैं। दो कारण से कहते हैं उधर कितने सुशोभित हो रहे दान के द्वारा, एक तो वास्तव में प्रेम और दूसरी श्रृंगार श्रीमती राधिका भी कृष्ण को बंधन किया, इसलिए राधा दामोदर के रूप में प्रसिद्ध है। जसोदा दामोदर और राधा दामोदर ये दोनों जो है भावों के द्वारा व्यक्त होती है। इसलिए आगे की जो है वर्णन करते हुए कहते हैं नमो राधिका वही तदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय। ये राधा शब्द के अतीव गुण शब्द नहीं, गुण शब्द का है, गंभीर शब्द का है, जिसमें सही बात है। भागवत में प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट रूप में वर्णन करना है। राधा के स्मरण होने के साथ ही साथ 6 महीने काल तक मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि अतीव प्रेम निगुण जिसमें रहता है उसको व्यक्त करना भी संभव नहीं है। अनेक लीला उनकी भाव की व्यक्त करना संभव नहीं था। जैसे मैंने सुना श्री गुरुदेव वर्णन करते थे, उनके गुरुदेव भक्त प्रकाश केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के अपकट के बाद उनके समाधि स्थल पर जाकर के प्रभुपाद निकाल दिया शब्द कहने के साथ ही साथ भक्त प्रकाश केशव गोस्वामी महाराज के dele costumava ir para o samadhi de Shila गले में हो जाते और आंखों से आंसू की धारा पड़ी। उसमें से गुरुदेव उसमें नाम quando nosso Gurudeva ele ficava com a voz embargada também, não conseguia falar o nome do seu Gurudeva. Eles têm tanto amor que fica difícil para eles expressarem com palavras. Porque eles estão sempre mergulhados no oceano de amor pelo Guru. Por isso, Srila Sukadeva Goswami, quando ele se lembra de Srimati Radhika, ele simplesmente desmaia. Porque ele tem dentro do coração dele esse profundo amor de Srimati Radhika. उनके राज्य के जितने भी प्रियाएं सखियां जो है उनको भी मैं नमन करता हूँ। Então, Namoradikaya Tadya Priyaya, que significa eu ofereço reverências ilimitadas a Srimati Radhika e a todos os seus servos, todas as golpes que servem a ela. Então, essa Tadya Priyaya significa aquelas que são queridas por Srimati Radhika. E aí depois é dito Namonanta Lila, que significa eu ofereço as minhas reverências a Shri Damodara, que realiza esses passatempos ilimitados. Por isso se refere Namonanta Lila, que significa que ele realiza esses passatempos ilimitados. किंतु गोपियां उस समय सोचने लगी क्षणकाल में उनके कृष्ण के साथ मिलन के समय लगते खराब और विरह के क्षणकाल में जो होता है क्या सुदीर्घ काल होता
E a Rasa Lila, que aconteceu por milhares de anos, mesmo assim as roupas, elas pensam que foi muito rápido. Esses sintomas de Mahabhava. Que é sentido simplesmente por Srimati Radhika. Como a gente pode compreender esse Rasa Tattva? Apesar da grandeza dos semideuses e semideuses, apesar disso, eles não conseguem entrar nessa Vraja Lila. Como a alma condicionada, então, assim, como a gente pode entrar? और वो भी देह प्राप्ति और बरकत का भाव, इसको तो गंभीर विचार इधर दिखा, जिसके इसमें कहते हैं नमो राधिका। Todas as roupas então fazem graça com esse para que ये लीला शब्द के द्वारा ही चतुर्थ वचन के द्वारा अनंत लीलायो दिखाया। अनंत लीला शब्द के चतुर्थ Então, como ele fala nesse último verso do Dhamma no Ananta Lila, ele está narrando os passatempos imortais realizados por Krishna, e o mais elevado sendo o Rasa. काम और प्रेम हम लोग एक समझे, और प्राकृतिक जगत में काम यथार्थ प्रेम है, और इस जगत में जब प्रेम का वो काम नहीं हो जाता है, क्योंकि इस जगत में कुछ लोग देखते हैं, जिस जगत की concepção errônea no nosso coração de que prema e cama é a mesma coisa. Isso está errado, não é errado. जिसमें भी कहते जगते सुजात चरणामृत गुण स्नेह गीता जहां पर गोपियां कृष्ण की सुंदर सुकोमल चरण कमल में जो है अपने कठोर वक्षस्थल पर रखने की भी भाई कहीं कृष्ण के चरण में कोई खर्च ना आ जाए, कष्ट ना, तो ये समस्त के भावों की भी तकलीफ राष्ट्र का कोई काम मिला नहीं, उसके बाद में काम भी नहीं। As roupas de materiais, elas hesitam em colocar os pés de Krishna no peito delas, porque elas temem que machuquem. Então isso é o amor. Isso é o verdadeiro amor. Então é uma concepção errônea comparar esse prema com o kama. राष्ट्र की कथा चक्र विचार करके सुनाते कहते ये अपराध और उसके अधपतन ये मेरे गुरुदेव ने ऐसे विचार दिया, नहीं तो समाज में जात और मनुष्य की जब इसको विचार बोलेगा राष्ट्र का ये गुण तत्व जो है उसके अधिकारी व्यक्ति मिले उसके साथ जत्र तत्र हाटे हाटे मान में राष्ट्र की कथा श्रवण करना अनुचित है और अपराध। Rasa Lila, esse serviço a Gurudeva tem um significado muito profundo. Quanto mais então, quanto mais a gente vai ouvindo, porque agora nesse ponto a gente não é elegível, a gente deve ouvir um dos Vaishnavas, esse begueiro dos Vaishnavas. और पुरुष के संग आदि करे, विवाह भी नहीं हुआ, पुरुषों के संग आदि किया, अवैध रूप में पुत्र संतान आदि प्रसव करने से जैसे समाज के द्वारा वो बहिष्कृत होता है। और संतान की को क्या उसके काटता जागृत संतान कहा जाता है, जो काटता। Então, nesse mundo a gente vê muitas meninas que não são casadas e têm relacionamento e depois de um tempo elas têm um filho. Isso não
isso é contra a cultura indiana. Não é aceito na sociedade, apesar de ser muito comum no mundo ocidental. A gente vê também que no Ocidente, na cultura ocidental, pessoas do mesmo sexo ficam atraídas um pelo outro, homem e mulher e se casam. Eles fazem coisas sem noção. दोनों की मिलन के जो संतान है उसे की माना जाता है। ठीक उसी प्रकार आदि संसार आदि रूपदासरा दीक्षा शिक्षा विश्रम देव गुरु सेवा ऐसे करते करते साधक जब अनर्थ निवृत्ति का निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव Então, pensa que na sociedade que homem e mulher se casam e depois de um certo tempo eles vão ter um filho. Para se alcançar o Supremo tem muitos estágios. Para se bala. नाम उनकी अपराधी का नाम जो नाम रूप गुण भी नहीं पंचदशा के भाग को व्यक्त करते हैं। São muitos estágios de prêmio, muitos estágios para alcançar o prêmio. E até então alcançar, até não passar por esses estágios não é possível alcançar. Uma pessoa que pensa que ela aceita a Gurudeva, canta Harinama, canta os mantras de forma apropriada, não está nem seguindo direito a escrita Vaishnava, cheia de capacidade, não está se abstendo de comer nada, não está se abstendo de comer nada. A pessoa vai ouvir Girasa Lila e Shigararasa e essa pessoa ela vai cair imediatamente. Por exemplo, se a gente bebe leite, a gente recebe força, um poder disso. Mas o mesmo leite que está contaminado pelo veneno vai fazer a gente doente, vai deixar a gente doente. Essas pessoas, esses bogaçados, esses Vaishnavas, se eles ouvem essa raça lila, eles vão cair. Vão entender errado, vão entender como sendo sobre cama. Aí eles vão cair. Então na escritura está escrito também que se você quer se livrar do luxúria material que está no seu coração, você tem que ouvir essa lila. Mas para remover essa luxúria material, a gente deve apenas ouvir essa raça lila quando a gente estiver acharada apropriada. E a gente deve ouvir apenas da boca de Vaishnavas elevados. Do contrário, a gente não deve ouvir. Até que um Tama Mahabhagavata nos fale a respeito de Shandarasa, Sarasa, só então essa luxúria material, nosso coração vai se livrar dessa luxúria material. श्रवण करना नहीं चाहिए। ये राष्ट्र की कथा की अधिकारी वर्णन करते उत्तम अधिकारी है। नहीं तो प्राकृतिक Então, a gente não deve ouvir a Sarasa Lila de um Madhyama Adhikari, porque ele não alcançou ainda o nível particular. A gente tem que ouvir só do Tama Mahabhagavata. कामियों के पास यदि कामिनी की कथा सुनाया जाए, उसके काम की भावना और भी बढ़ती है। E também,
quando a gente faz o sacrifício de fogo, a gente coloca ghee, वो ऑलरेडी o सिस्टम fogo ele vai se में aumentar mais e mais. मैंने काम करने के Dessa forma, a luxúria material que está presente no coração, स्थिति हो जाएगी ela é assim. पतन की काम जिसमें कहते हैं Então, था तो जो है a gente ouve अतीब dar essa livra de uma pessoa que não é qualificada, a nossa luxúria material ela vai aumentar mais e mais. इसलिए कहते हैं नमो राधिकाओ तदीय प्रियाओ Então, नमो por isso ele fala no final, no último verso, Namoradikaya Tadyapriya. ऐसे हमारे हृदय में वो Obrigada. भाव प्रकट हो किस प्रकार E a gente ora अपने como alcançar esse Brajava. कृष्ण भी खुशी किया है इसमें प्रॉब्लम की वर्णन करती है वेद Como exatamente, gente? इस मस्त श्लोकों के साथ वर्णन करती है अधिकार जब नहीं है अनधिकार में करे कुछ लाभ नहीं Até que a gente tenha uma qualificação, esse grau, a gente não deve nem tentar entrar nisso. Tudo depende da nossa qualificação. Nesse mundo, então, o que acontece? Tem muita gente que, por exemplo, a pessoa que está falando Harikata, ela começa a chorar. Então as pessoas acham que tem que ouvir Harikata só. A gente tem que ouvir só de quem tem esse Brajabhava assim dentro do coração dela. Eu não ouvi de Saradis. Tem muitos babas, muitos Saradis babajis, que apesar do coração dele estar cheio de luxúria material, externamente eles estão mostrando externamente que eles já alcançaram o Gopi Bhava, que o coração deles não tem luxúria. Então as pessoas acham que só porque a pessoa está mais velha e elas têm uma barba branca, acho que ele falou isso, quer dizer que ela tem Gopi Bhava. Não, Gopi Bhava depende do que você tem, do que tem dentro do coração. Só quando a gente ouve a respeito dessa Aprakrita Kama, esse amor transcendental, é só assim então que nosso coração ele se livra dessa luxúria imaterial. क्योंकि जब तक वो भाव प्रवेश न करे ये तो रही। इसलिए गुरुगोविंद महाराज की कथा सुनाते थे ये विद्वता और स्टिल ऑफ पॉडकास्ट टू बी नॉनसेंस। Até que a pessoa tenha esse bavo dentro do coração, ela não é qualificada para falar, para recitar essa Brajalila. Então o que esses babajis no Saradis fazem? Eles simplesmente dizem, nosso coração está cheio desse Gopi Bhava. E aí eles conseguem muitas meninas e eles fazem Rasalila com elas. ये वैष्णव के रचित ग्रंथ है स्त्री पुरुषों की कैसे मिलन होता है सब लिखा है जो विवाह नहीं करते वो विवाह नहीं करते वो सब पढ़ते रहते सब तो उसके लिए वो उदाहरण दे रहे हैं दिल्ली था। Então se você lê o que essas pessoas escrevem, aquilo que elas escrevem vai estar cheio da luxúria material que está no coração delas. Exemplo do gato e do rato.
तिलक लगाया, कंठी माला लगा दी, हाथ gato में ये velho. जपमाला ले लिया और ध्यान करके बैठ गए। उस घर में जो चूहे का चूहे देखा, अरे ये आज बिल्ली तो बिल्कुल विष्णु हो गया, शाकाहारी हो गया, साधु बन गया। हाँ, वो दूर से देखने लगे, वास्तव है कि नहीं। तो वो बिल्ली Então o कहने gato लगी, अरे नहीं, velho देखो assim, मैं tá आज correndo बिल्कुल शाकाहारी हूँ। tá correndo atrás do rato, tá pensando como ele vai comer. मांस के नाम सुन के क्या मेरा उल्टी हो जाता। E o que é isso que acontece nesse mundo? O que os sadhus, babajis e avaishnavas fazem? Colocam só uma roupa assim de Vaishnava, tilaka, kantimala, roupa safrão e falam: a gente tem esse golpe baba, então você tem que vir aqui e ouvir o que a gente fala. E é o que essas pessoas fazem, se colocam, externamente mostram sintomas, passando tílaka, etc. E aí começa a recitar o Bhagavatam. Mas a gente nunca tem que ouvir essas pessoas. Adhikar. सुंदर सुंदर जो है जुटी है ना, हाँ कुछ है ना, वो सब बोले अच्छा। इसके पर हम दशम स्कंद से लेकर के दशम स्कंद पाठ करते करते कहाँ चले गए? 28 अध्याय तक चले गए, 29 अध्याय को आज तक नहीं होता। उसमें छानबीन करके भेज दिया जो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जो चूहे है ना, सुंदर सुंदर उनको आगे ले गए। क्योंकि देखो ये राजा के पति भी प्रसन्न सुन के जो नहीं, हमारे कथा कहीं बाहर ना चले जाए, एक काम Então, o que esses sadhus fazem? Eles falam assim, não é todo mundo que tem a qualificação para ouvir esse kata. Então eles fazem assim, eles selecionam. Falam, só você que é qualificado, só você pode vir ouvir. Então é igual o gato que seleciona aqueles ratos que são os mais bonitos. E aí ele então seleciona, só vocês podem vir e ouvir. Aí o que eles fazem depois do Bhagavad Gita, eles pegam todas as meninas e levam para o seu quarto e tentam fazer sarasa lila com elas, disfarçados. बस दशम स्कंद की कथा में भगवान में रात्रि, बस सर्वगुरु रात्रि है, बस झपट झपट करके एक एक चूहे को वो उसी प्रकार काम करके ऐसे लोगों को इकट्ठा करने के लिए लंपट आदि करने के लिए Quando chega a noite, então, eles agarram a presa. Eles tentam, então, pegar essas pessoas. Isso, Satyavrata Muni, ele está terminando, assim, com esse Namoradikaya, repetidas vezes, está sendo... Não. A gente então deve ouvir essa graça ali só de quem tem a qualificação. Só quando a gente tiver a qualificação, porque até lá então, a gente não deve ouvir.